हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। सो आई वेलकम्स यू इन आवर चैनल साइबरसेक लाइव, जहां हम खूब सारी एथिकल हैकिंग की वीडियोस अपलोड कर रहे हैं ऑन द डेली बेसिस। सो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग एंड लिनक्स बेसिक्स, विच इज़ द पार्ट सेकंड। अगर आपने इससे पहले का पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ जस्ट क्लिक ऑन दैट आई बटन एंड यू विल गेट लॉट ऑफ वीडियोस, और आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। हमने एक लैब सेटअप भी करवाई है काले लिनक्स और वर्चुअल बॉक्स की। सो आप उसको देखना मत भूलिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड इन दिस लेक्चर। ओके, सो वी हैव सम कंटेंट्स, देख लेते हैं। पहला है आईपी एड्रेसेस एंड इट्स क्लासेस। हम इसके बारे में बात करेंगे कि आईपी एड्रेसेस क्या होते हैं, इनकी क्लासेस क्या होती हैं। देन हम बात करते हैं कि कुछ प्राइवेट एड्रेसेस रहते हैं कि आप उसे कैसे पहचानेंगे। अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। स्पेशल एड्रेसेस कौन से होते हैं? IPv4 एड्रेस एग्जॉशन। IPv4 और IPv6 आपने सुना है, बट IPv4 अगर है तो IPv6 क्यों आया, इसकी हम बात करेंगे। OSI मॉडल लेयर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट, और इसके कौन से टाइप्स हैं उसकी बातें करेंगे हम। TCP IP मॉडल, ये कैसे डिफरेंट करता है OSI मॉडल से, क्या है। एंड एट लास्ट वी विल गिव सम रेफरेंस जिससे आपको हेल्प हो सके फ्यूचर के लिए। और एक बात और दोस्तों की, नोट्स बनाना मत भूलिएगा। तो आईपी एड्रेसेस एंड इट्स क्लासेस। आईपी एड्रेस क्या होते हैं? So IP address and internet protocol. This is the IPs stand for. An internet protocol add is a logical numerical address that is assigned to every single computer, such that printer, switch, or any other network devices that is part of a TCP/IP based network. So ये it's nothing but it's a logical numerical address you can say, जो कि हर एक डिवाइस को एक यूनिक आईपी दी जाती है। एड्रेसेस इन IPv4 आर 30 बिट लॉन्ग, राइट। सो अगर इस पे हम चलें तो अगर 32 बिट लॉन्ग है, मींस इट अलाउज एट मैक्सिमम समथिंग 4 बिलियन यूनिक एड्रेसेस, राइट। समथिंग 4 बिलियन यूनिक डिवाइसेस, बट देयर आर नाउ more than this. So addresses in IPv6 are 128 bits, which allows 2 raised to power 128 unique addresses. So that's a uh, lot of gap between these IPv4 and IPv6. IANA क्या होता है? IANA एक ऐसी अथॉरिटी है जो आईपी एड्रेसेस असाइन करती है, भले से वो कोई ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी एक पर्टिकुलर सिस्टम है जिनको पब्लिक आईपी की जरूरत हो। सो इंटरनेट असाइन नंबर अथॉरिटी, इट स्टैंड्स फॉर। अब आईपी एड्रेसेस की क्लासेस देखते हैं। क्लास ए, जिसकी रेंज होती है 0 to 126, क्लास बी 128 to 191, एंड क्लास सी 192 223, class D 224 to 254, and class C is 240. Okay, so there is something mistake I have done in C class. So it's from class D is from 224 to 239, and C class is 240 to 254. So here is a something mistake. Class D is 224 to 239, and class E, this is not a C, it's a E, so it's 240 to 254. So let's talk about class A. So in class A network, the first 8 bits or the first dotted decimal is the network part of the address, while the remaining part of the address being the more host part of the address. कैसे होता है? तो 128 पॉसिबल्स आपने कह सकते हैं कि क्लास ए नेटवर्क्स हैं। कैसे स्टार्ट होता है? 0 to 127.0.0.0, बट आपने कंसीडर करते हैं 0 to 126। why we are considering this as 0 to 126 range? Because 127 is the loop back address, that's why we consider it only 0 to 126. So this is one of the important point.
आपके शायद एग्जाम में आ सकता है, आपके एथिकल हैकिंग के एग्जाम में आ सकता है, जो आप CH का अगर एग्जाम देते हैं तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको जरूर ये पूछा जाएगा, अगर अगर आप कभी भी आप क्लास आईपी की क्लासेस पढ़ने वाले हैं तो 127 के बारे में जरूर पूछेंगे कि लूप बैक एड्रेस क्या होता है. So fifth one is we have some example for class A IP addresses such that uh, 2.134.213. So it's basically it will be under 127, we can say 0 to 126, the first one. Class B. Class B क्या होता है? In class B network the first 16 bits are the network part of the address. So first 16 bits address जो रहते हैं वो part रहते हैं addresses के. All class B networks have their own first bit set to 1 and the second bit set to 0. In dotted decimal notation, that makes 128.0.0.0 to 191 to 255. So you can see these two bits which is showing that as class B networks. So there are totally 16,324 possible class B networks. एग्जाम्पल ले लेते हैं अपने 135.58.24.70. It's a class B IP. So how you will identify? You will identify the class of any IP with its range. So the range of class B is from 128 to 191. Okay. In class C network, the first two bits are set to 1 and the third bit is set to 0. That makes that the first 24 bits of the address, the network address, and the remainder as the host address. Class C network addresses ranges from 192 to 223. There are over 2 million possible class C networks. Example देखते हैं. Example such that 192.168.178. Class D. So what is class D? Class D address are used to multicasting applications. So those who don't know about the multicasting, it is something like one to many. So one to many applications you can say. और multicasting के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो we already have been discussed in the previous video. So you can just click on that I button and you can watch that previous video as well. Unlike the previous classes, the class D is not used for normal networking operations. Class D addresses have their first three bits set to 1 and their fourth bit set to 0. Class D addresses are 32-bit network addresses, meaning that all the values within the range of 224.0.0.0 to 239.255.255.255. So the maximum range is, you can say, we have 256 bits of IPs, right? So that's why starting from the 0 and ending to 2555. So it cannot be, इसके आगे वो नहीं जा सकता है. अगर आप कहते हैं कि 257 IP, so ये ऐसा कभी नहीं हो सकता है, because already ये set है कि 256 तक ही होने वाला है. So are used to uniquely identify multicast groups. So class D is different from A, B, and C. And there are no host addresses within the class D address space, since all the hosts within a group share the group's IP address for the receiver purposes. Example 227.21.6.173. So at last we have the last class of the IP, that is class E. Class E networks are defined by having the first four network address bits as 1. That encompasses addresses from 240 to 255. So this is the last IP address, you can say, right? 255, 255, 255. While this class is reserved, its usage was never defined. As a result, most network implementations discard these addresses as illegal or undefined. The exception is 255.255.255.255. तो इस आईपी को अपने यूज करते हैं ब्रॉडकास्ट एड्रेस के लिए. ये और कहीं पे भी ये आईपी कभी भी यूज नहीं होगी. एग्जाम्पल ले लेते हैं.
sorry, it's a class E IP address. So 243.164.89.28. अब बात करते हैं कि प्राइवेट एड्रेसेस क्या होते हैं। कुछ प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं क्लास ए टू ई के अलावा, कुछ प्राइवेट एड्रेसेस फिक्स्ड हैं। हाँ, हाउ वी विल नो कि हाँ वो एक प्राइवेट एड्रेस होने वाले हैं। सो देख लेते हैं। पैकेट्स फ्रॉम दीज नेटवर्क्स आर नॉट राउटेड अक्रॉस द पब्लिक इंटरनेट। दिस प्रोवाइड्स अ वे फॉर प्रोवाइड नेटवर्क्स टू यूज इंटरनल आईपी एड्रेस विदाउट इंटरफेयरिंग विद द अदर नेटवर्क्स। अगर किसी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो आपको पता है कि जो प्राइवेट एड्रेसेस होते हैं उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो 10.0.02 से लेके अगर 10 डॉट समथिंग आपकी ब्रॉडकास्ट आईपी तक है तो वो आपका प्राइवेट नेटवर्क है। अगर 172 स्टार्टिंग फ्रॉम 172.16 अप टू 172.32, अगर इस रेंज में अगर आपको कोई आईपी दिखती है तो दैट इज प्राइवेट नेटवर्क, दैट इज बिलोंग्स टू सम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखते हैं 192.168.0.02 आईपी 192.168 टू 255.255, इट मींस अगर इस रेंज में अगर कोई आप आईपी देखते हैं दैट इज आल्सो प्राइवेट। सो दीज आर द सम टेक्निक्स टू फाइंड आउट दैट विच इज द प्राइवेट आईपी। अब स्पेशल एड्रेसेस क्या होते हैं। सर्टेन IPv4 addresses are set aside for specific use, जैसे 127.0.0.0 को लूप बैक एड्रेस अपने मानते हैं। तो कभी भी अगर आप लोकल सिस्टम पे अगर कुछ भी चलाते हो, लेट्स से कि आपने कुछ स्पेसिफिक चीजें इंस्टॉल की हैं, लेट्स से DVWA और समथिंग एल्स, आप जो भी हैकिंग के लिए चीजें आप यूज कर रहे हो, तो वो लूप बैक एड्रेस पे ही चलेंगी। उसको हम लोकल नेटवर्क भी बोलते हैं। सो 224 आईपी मल्टीकास्ट के लिए यूज होता है, ये भी रिजर्व्ड है, ये स्पेशल एड्रेसेस है। एंड एट लास्ट वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस वन 255.255.255। सो दिस वन इज यूज्ड फॉर ब्रॉडकास्टिंग। Now question is that why we have IPv6 if we already have IPv4 address? So now see guys, IPv4 is exhausting. Why it is exhausting? Initially जो IANA है उन्होंने माना कि इतनी शायद आईपी इनफ होगी, जो कि 2 raised to power 32 है, जो कि नियर अबाउट अगर अपने काउंट करें तो नियर अबाउट 4.3 बिलियन होती हैं। बट लेटर ऑन वे दे गेट टू नो दैट कि हाँ ये आईपी एग्जॉस्ट हो जाएंगी और अपने पास और डिवाइसेस आने वाले हैं और हर एक डिवाइसेस को अपने को आईपी देना पड़ेगा। सो इसके लिए उन्होंने IPv6 का कॉन्सेप्ट लिया है, जिसके पास 2 raised to power 128 एड्रेसेस हैं। तो 2 raised to power 128 को आप कन्वर्ट करके देख लीजिए कितना आता है। आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा डिवाइसेस कभी होंगे। इन फ्यूचर अगर कभी होंगे भी तो मे बी सम अदर concepts विल कम। सो हाउएवर ओवर टाइम इट बिकम्स अपेरेंट एज आई एम सेइंग कि IPv4 के एड्रेसेस जो हैं वो ज़्यादा इनफ नहीं थे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड इंटरनेट्स विद यूनिट्स एंड डिवाइसेस पर पर्सन के लिए हर एक डिवाइसेस हो रहे थे। The last top level address blocks were allocated in 2011. That's why the idea of IPv6 come, which is having addresses 2 raised to power 128. I hope you understand this question, because if you are doing something, if you are in BCA, BTech, or doing anything courses related to computer science, then this is the very important questions they will ask. And you should also know, as if you want to ethical hacking, then you should also know that why it is exhausting. So the next one is very important. What is OSI model layer? So in OSI model layer, we have 7 layers, which is starting from the down. The first one will be physical layer, which is physical structure data link layer, which is in which we will talk about the frames. Then network layer, we will talk about the packets and the protocols like IP, ICMP, IPsec, we will talk about that. ट्रांसपोर्ट लेयर में अपने एंड टू एंड कम्युनिकेशंस होते हैं, तो वो कैसे होते हैं, TCP
यूडीपी क्या होते हैं वो बात करेंगे। सेशन सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेशन लेयर इन विच सिंक एंड सेंड टू पोर्ट, इसकी बात करने वाले हैं हम। प्रेजेंटेशन, सिंटेक्स लेयर एंड एट लास्ट एप्लीकेशन एंड यूजर लेयर। सो डोंट थिंक कि ये ऊपर से स्टार्ट होता है एप्लीकेशन प्रेजेंट, ऐसे नहीं है, but it start from the reverse one. First one is physical, second one is data, third one is network, fourth one is transport, fifth one session, sixth one presentation, and seventh one is application layer. So we will see one by one what it is. So the first one is physical layer. So what is physical layer basically? It is responsible for transmission and reception of the unstructured raw data over network. It converts the digital analog bits into electrical signal. And for example, we have many protocols like Ethernet. आप केबल यूज करते हो Ethernet का, राइट? वो वर्क करता है फिजिकल लेयर पे। क्या फिजिकल लेयर एक्चुअल में क्या है कि कोई भी इसको अगर डेटा मिलता है तो वो रॉ डेटा को नेटवर्क के ऊपर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। कोई भी अगर डिजिटल या एनालॉग बिट्स उसके पास आती है तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है। जैसे आपका ईथरनेट है, राइट? उसमें कुछ ना कुछ डेटा आ रहा है, बट इट इज कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। सिमिलरली आपका ब्लूटूथ, ब्लूटूथ एक शेयरिंग डिवाइस है। यूनिवर्सल सीरियल बस जिसे हम यूएसबी बोलते हैं, इंफ्रारेड डेटा एसोसिएशन, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क and digital subscribe line. So there are a lot of examples regarding the protocol of physical layer. So I hope you understand this physical layer, what it exactly and how it works. So you can also deep down, you can study it about the OSI model layer. So the second one we have data link layer, which is mainly used for transmitting and receiving data frames sequentially, is managed by this layer. The main function of this layer is to make sure that data transfer is error free from one node to another node. So what is node here? Node is something you can call device. So one device to another device you can say. So Ethernet, point to point protocol, HDLC, ADCCP are some protocols of data link layer. Network layer. So what is network layer? It decides which physical path the data will take. मीन्स आपके पास अगर डेटा आ रहा है नेटवर्क लेयर के पास, जब भी जाएगा डेटा लिंक लेयर के बाद डेटा आपका जाने वाला है नेटवर्क लेयर के पास, राइट? तो नेटवर्क लेयर में क्या होगा कि नेटवर्क लेयर उसको वो पार्ट डिसाइड करेगा जिसके लिए वो सुटेबल है. So it divided the outgoing messages into packets and assembles the incoming packets into message. For example, we have a lot of protocols for network layer like IPv4, IPv6 Internet Protocol as we discussed earlier, IPsec, Internet Protocol Security, IGMP, ICMP, DDP, Datagram Delivery Protocol. So these are the some protocols of network layer which work on this layer. Transport layer, which is very important because functions such as multiplexing, segmentation, or splitting of the data are done by this layer. Some protocols of transport like UDP, which is known as User Datagram Protocol, TCP Transmission Control Protocol, RDP Reliable Data Protocol. Next one is session layer. It maintains the connection and it is responsible for controlling पोर्ट्स एंड सेशंस. कभी कभी आपने देखा होगा कि आपको मिलता होगा कि योर सेशंस हैज बीन एक्सपायर्ड. सो पर्टिकुलर वो सर्विसेज के लिए ये लेयर काम करती है. जैसे आपका एग्जांपल हो गया पॉइंट टू पॉइंट टनलिंग प्रोटोकॉल, राइट? रिमोट प्रोसीजरल प्रोटोकॉल, पासवर्ड ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल. अगर आप कहीं पे पासवर्ड डाल रहे हो, आपने 10 मिनट के लिए ओपन कर रखा है, तो मे भी उसका हो सकता है कि सेशन आउट हो सकता है. OSI session layer, Apple Talk session protocol. So these are the some protocols of session layers. And the next one is presentation layer. So this is a sixth layer and it takes that the data is sent in such a way
that the receiver will understand the information and will be able to use the data. Correct. So it performs mainly data compression, data encryption and data conversion. इस लेयर पे क्या होता है कि आपका जो भी डेटा है वो उसको एनक्रिप्ट करने का काम होता है, उसको कॉम्प्रेस करने का काम होता है, उसको कन्वर्ट करने का काम होता है। जैसे आपका HTTP या फिर HTML एजेंट है, FTP के सर्वर्स हो गए, SSL हो गया, सिक्योर सॉकेट लेयर, एप्पल टॉकिंग फीलिंग प्रोटोकॉल हो गया या फिर टेलनेट हो गया। दीज आर द सम प्रोटोकॉल्स विच इज in the presentation layer. And the last one is, which is the seventh layer, we call it application layer. So this layers may be called as mesh server, directory services and network services used by the end users, right? So it contains a variety of protocols that are commonly needed by users. One widely used application protocol is HTTP. अगर आपसे कभी पूछा जाता है कि HTTP कौन से प्रोटोकॉल पे वर्क करती है, सो डेफिनेटली यू आर यूजिंग एन एप्लीकेशन, और आप एप्लीकेशन पे आप HTTP डालते हो कि डालते हो किसी भी ब्राउजर पे, कोई भी आप वेबसाइट खोलते हो तो यू विल सी कि वहाँ पे HTTP रहता है। तो वो HTTP एप्लीकेशन लेयर पे वर्क करती है, विच इज बेसिस ऑफ फॉर द वर्ल्ड वाइड वेब, यू कैन से। When a browser wants a web page, it sends the name of the page it wants to the server hosting the page using HTTP. The server then sends the page back. Other application protocols are used to file transfer, electronic mail, and network news. And there are some protocols of applications like Bitcoin, BitTorrent, Atom Publishing protocols. So these are the some examples of application protocols. Now we have the next one is TCP IP model layer. So it is a concise version of OSI model. It contains 4 layers, unlike 7 layers in the OSI model layers. तो OSI model layers में अपने पास 7 layers थे, but TCP IP में we have only 4 model layers. Let's see how it is happening. So we have 4, which 4 1 process, which is which we call application layer, host to host means transport layer protocol, and the internet layer protocol, and the last one is network access, which is link layer, you can say. So here is the difference. We have first one is physical data network transport session presentation application. So आपको यहाँ पे ध्यान देखने वाली ये बात है कि application, presentation and session, these layers are converted into a single layers under the TCP IP model, which is application layers, right? So these three you already know, and these three as comes in only a single layers, which is application. Now we have transport. Transport comes in the transport category as well, network. But here in the data link and physical layer network, that one is categorized into network interface layer. So that's the only difference, that these 7 layers has been categorized into the uh, four layers of TCP IP model. Here are some references, guys. Please go through these references. These are very important references and you can make the notes. And remember one thing, कि जब तक आपके बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तब तक आप ना हैकिंग सीख सकेंगे ना बग बाउंटी सीख सकेंगे। सो इफ यू वांट टू अर्न मनी, अगर आपको पैसे चाहिए, आपको बहुत पैसे चाहिए, तो hacking is one of the best field, but that for you should have some understanding, basic understanding of some basic knowledges of cyber security. I hope कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द प्रेस द लाइक बटन। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लिनक्स के कुछ बेसिक्स, वहां से अपनी हैकिंग के जो ओरिजिनल वीडियोस है वो स्टार्ट होगी। सो बाय बाय, टेक केयर।